Hi everyone, Ashish Kyal here, and warm welcome to Friday at 4. We are going to look at markets. We are going to look at what is next from here, what is NeoWave suggesting, all of those things. And it's glad to connected with every one of you. The chat is on, and people, if you are there on YouTube and watching it live, do not forget to join me on the Zoom platform क्योंकि clarity Zoom पे ज्यादा आती है दोस्तों। और Zoom का लिंक मैं बहुत ही क्विकली यहाँ पर शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में। ये रही Zoom लिंक। You can join me on the Zoom platform. And before I move on to the main Friday at 4, I want to ask you all, how are you doing? And is the market treating you right? Are you on the right side of the trend? I'm sure if you are, Pallavi, I know you are joining after a long time. Shubham, glad to see you. Nanjesh, fantastic to have you also here. Hassan Ali, the markets are just rocking because of me. मार्केट्स रॉक कर रहा है दोस्तों, और जैसा सोच रहे वैसा चल रहा है। इट इज टू द पॉइंट। अगर ऐसा है तो एक थम्स अप दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मार्केट में जो मैं ट्वीट कर रहा हूं, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ये सारी चीजें अगर पसंद आ रही है तो। और मॉर्निंग ट्विटर लेवल्स विद टाइम, is it working for you? It's moving according to the Agni report, Ramagowda. Fantastic. It is glad to know that कि आप सभी के साथ में ये जो हमने मार्केट के बारे में बातचीत कर रही है, आपके साथ काम कर रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं उस तरीके से काम हो रहा है। इट्स रियली लवली टू नो दैट। आनंद जी आप ही हो यहाँ पर। ऑल ट्रेड्स आर प्लस आपका मैसेज मिला था। ही इज द ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स। ही हैज मैसेज आई थिंक अराउंड 1,50,000 एक हफ्ते में बनाया उन्होंने फ्रॉम 90,000 कैपिटल। मनोज कुमार आप ब्रह्मास्त्र में हो। मैंने देखा था आपको वेनसडे को हमारा ब्रह्मास्त्र का जो सेशन शुरू हुआ था। बिफोर आई मूव ऑन, द टाइम ऑफ 11:15 बट द बॉटम वाज एट 10:15। देखिए 11:15 वाज नॉट द बॉटम। आई एम नॉट क्लेमिंग कि वो बॉटम था। आई एम क्लेमिंग 11:15 को मार्केट कहां था, वो लो क्या था, और वो लो से 200 पॉइंट मिला ना। बॉटम किसे पकड़ना है, हमें तो ट्रेंड पकड़ना है। दोनों में फर्क समझिए। नंजेश कह रहे सर दिस वीक आई अर्न 1 लाख ओनली बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस। ग्लैड टू नो, सो फैंटास्टिक गाइस। इट मींस दैट हमारा जो लेवल्स है काम कर रहा है, टाइम साइकिल है रॉक कर रहा है, और मार्केट जैसा सोच रहे वैसा चल रहा है। आगे बढ़ने के पहले बहुत क्विकली मैं एक चार्ट आपके सामने रखूंगा, और वो चार्ट आप देखें। दो चार्ट मैं आपके सामने रखूंगा, एंड वंस यू सी दिस टू चार्ट्स यू विल बी शॉक्ड टू सी how is it possible that someone can forecast the market much before it happened. And I'm sure you might be also thinking about gold, silver, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। कहां पर जाके रुकेगा ये प्रेशियस मेटल की, नहीं रुकेगा। आप चलाते हो सर मार्केट को, यार इतने बड़े बाजार को मैं कहां चलाऊंगा। प्राइस इज गॉड, भाव भगवान से मैं नहीं चलाता। यहां पर अगर मैं जाके अभी मैं बहुत ही क्विकली थोड़ी सी चीजें मैं ओपन कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले डायरेक्टर साहब सभी के साथ में क्यूआर कोड शेयर करिए व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप की लिंक शेयर करिए। मैं क्यूआर कोड यहां पर दिखा देता हूं बहुत ही क्विकली। कहां गया मेरा क्यूआर कोड व्हाट्सएप का, ये रहा मेरे साथ में। और आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे फटाफट ज्वाइन कर जाइए, and give me a thumbs up once you join the WhatsApp community so that I know आप join कर चुके हो। and people who are there on YouTube, do not forget to join on the Zoom platform। लिंक आपके साथ में, WhatsApp ग्रुप की लिंक भी आपको दे रखी है। Boris is saying sir your prediction is running like a bullet train, I missed the train। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से कहां हॉल्ट आएगा मैं आपको बताता हूं। I have been reading about you since the early days of trading during CMT preparation back in 2016-17। Glad to know कि आप सीख रहे हो वो समय से। एंड ऑसम, सो सुपर। या माय लेवल्स आर ऑन स्पॉट। सो आप लोग ये ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हो, लवली। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव जॉइन द ग्रुप अक्रॉस। यहां पर एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये चार्ट की डेट भी मैं आपको बताऊंगा। This is the chart. Are you able to see this? Every one of you. Every one of you. Are you here with me? Can you see this chart? The prediction, right when Nifty was breaking about that 24,728, closing 24,830 tha, this is where we should be. Let's go on the chart and see what happened. Just see this. You will see the magic of this is Neo Wave. Neo Wave is an advance of Elliott Wave with more rules, more patterns, and the diametric pattern works fantastic. And if Nifty is ready to move by 800 points was mentioned on this
स्पेसिफिक चार्ट, और ये डेट थी 2 अक्टूबर की। इधर ऊपर लिखा है स्क्रीनशॉट का नाम 2 अक्टूबर का। और यहां पर देखिए हम अभी कहां पर है। लुक एट इट। दिस इज आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ, द लेटेस्ट वन। या दिस इज वेयर वी आर। कैन यू बिलीव दैट? आर यू गाइज विथ मी? लुक एट दिस मैजिक। यहां तक का मूव मेंशन था व्हेन इट वाज हियर, ये कैंडल पे। कैन यू सी दैट? एंड टैरिफ अभी भी 50% है, नथिंग चेंज्ड। रूपी depreciated, nothing changed. Results are not good, nothing changed. But market is doing what it is supposed to do, because ભાવ ભગવાન છે, સમય બલવાન છે. Time cycle, that's the power of time, was on the buy side. Price action confirmation happened here, and we got a rocket एज एक्सपेक्टेड। अभी मार्केट यहां से वापस से 500 पॉइंट गिरे तो गिरने दो, हमारा काम तो हो गया। वी वांटेड टू मेक 800 पॉइंट्स फ्रॉम दैट लेवल, वी हैव ऑलरेडी मेड 600 पॉइंट्स। 200 पॉइंट बाकी, अगर मिल गया तो ब्रिलियंट है, नहीं मिला तो भी लॉस नहीं हुआ। So this is how you have to use this research. So there are two parts of it, दोस्तों. One is forecasting, and one is about, like I was teaching on Wednesday also to Brahmastra. फोरकास्टिंग एक एबिलिटी होती है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझने की, और प्राइस एक्शन दूसरी एबिलिटी होती है मार्केट को ट्रेड करने की। एंड इट इज हाउ इट इज सपोज टू बी। ये एक चार्ट दिखाया, नीरज मलिक कह रहे हैं आई कांट बिलीव इट। दूसरा चार्ट में दिखाता हूं, दूसरा चार्ट में दिखाता हूं आपको यहां पे, बैंक निफ्टी का। ये चार्ट देखना दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, बैंक निफ्टी का चार्ट है। विश्वास नहीं होगा, ये नहीं, बैंक निफ्टी का चार्ट है यहां पर। ये चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का वेव टू कंप्लीशन एंड द थर्ड शुड स्टार्ट। बल्कि ये जो अप मूव और डाउन मूव है, ये भी प्रिडिक्ट किया था होने के पहले। बैंक निफ्टी पे अगर आप जाके देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, इट इज अनबिलीवेबल। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अक्रॉस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट on Bank Nifty. Look at it. A classic up move, down move from the cycle and reversed up. In fact, Bank Nifty ने एक बहुत ही सुपर पैटर्न बनाया है दोस्तों, शोल्डर, head and shoulder. The reason I am showing you the anticipation and the happen chart is to make you understand the concepts of neo wave with time works like magic. So if you are looking at Bank Nifty chart right now, you can clearly see that Bank Nifty formed inverse head and shoulder pattern. Okay, inverse head and shoulder pattern, gave breakout above it near 55,600, retested, and now resuming its upward journey. टारगेट चाहिए आपको कितना? अपवर्ड जर्नी। तो क्या टारगेट आएगा मेरा? मेरा टारगेट आएगा द विड्थ ऑफ द पैटर्न। सो इफ आई हैव टू प्रोजेक्ट द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी, आई माइट हैव टू जस्ट सिंपली कम हियर, measure the head width and forecast it on the upside. Now that's how we are going to derive the target from the breakout level. That's the target. So बैंक निफ्टी का टारगेट लाइफ टाइम हाइस पे आता है दोस्तों 58,300, 58,300. That's the target. You will not believe how it works, and this is simple, and मैं ये लेके रखूंगा। हो सकता है probability, it's all about probability. You have to understand the game of probability, and basis of that probability you have to trade. So Bank Nifty has formed a very classic inverted head and shoulder pattern with the volumes breakout, retest of the neckline, and now going to head another 4.5 to 5% on the upside is what I can clearly see. Vinay, glad to see you also here. That's the बैंक निफ्टी एंड 1 आवर चार्ट। बहुत सारे जन बोले सर आप बैंक निफ्टी पे बात नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों नहीं बैंक निफ्टी पे बात की जाए। देखिए इस चार्ट को दोस्तों, एंड यहां पर मेरा एक ही इंडिकेटर में लगा के रखता हूं जिससे बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, यू कैन सी इट अ वेरी क्लियर, मतलब इतना क्लियर एचएनएस पैटर्न कब देखा था आपने? एंड हर्षु को लिंक दे दीजिए डायरेक्टर साहब यहां पर।
और यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत क्लियरली, दिस इज द लेवल. सो everything comes with a condition. Nothing is 100% sure shot. Whatever we are doing is purely learning perspective. Ensure you maintain a stop loss, understand the risk, and if you are looking at it, अगर बैंक निफ्टी 55,555 के नीचे आ जाता है तो गड़बड़ है, which means it is moving back below the neckline. So the condition of an upward journey will continue unless and until I see this moving back below the neckline. Are you with me, every one of you? Can you see this chart? ये एच खाली मुझे ही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है दोस्तों, मतलब टेक्स्ट बुक है. तो despite of everything, this is how it's working out. So that's what Bank Nifty is suggesting. That's what Bank Nifty is showing right now. And it is simply amazing. And आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी. एंड यहाँ पर एक और चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो बहुत पहले का चार्ट है. एंड विल गो टू नियो वेव कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत पहले का चार्ट है, ये नियो वेव का कॉन्सेप्ट है. तो यहां पर अगर आप चार्ट देखेंगे, दिस इज द वेव ई एंड आई मेंशन वी आर हियर. दिस वाज व्हेन द मार्केट्स वर जस्ट स्टार्टेड टू गो अप. वी आर हियर, वी हैव मूव्ड ओनली टिल दिस पॉइंट नाउ. अभी तक तो यहां पर आए. सो यहां से हम ऊपर गए, यहां से नीचे आए, रीटेस्ट किया, एंड वी आर हेडेड टुवर्ड दैट. सो दिस इज गोइंग टू बी, this is how it's moving. The ultimate target is crossing that 26,000 mark on the market basis of neo wave. The right hand side that you are seeing is a volume profile. Do you want to know a little more about volume profile, guys? Are you with me? वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में थोड़ा देखना है क्या? यहाँ पर ये जो चार्ट है ये नियो वेव का है, एंड दिस इज द नियो वेव, एंड बेसिस ऑफ दैट नियो वेव we are seeing that movement. Can you see that? This is where we were, this is where we are, and we are still headed up. We are headed up. So let me go on the volume profile chart right now. And people who are there on YouTube, are you there? Are you liking the short videos on Twitter and YouTube? If you're watching this, if you're liking those short videos, do mention it across if these videos are useful for you all. And 1 second, I'm just going to be going back on my Go charting screen. एक Go charting पे जाने के पहले I wanted to show you something very, very interesting. A new research that I'm working on. Do you want to see that new research, which is known as the sector rotation, looking at an RRG graph, which is completely different than everything that we might have done so far and everything that I have done so far. So वो research के बारे में मैं आपको एक I want to show you something amazing. I mean, I'm building up on it, and I'm going to teach that in my ongoing mentorship program also. Once I'm little confident about it, but I just want to show you across what that research is. Let me just go on the chart here. I didn't plan to share it across, but I think I should share it across. This is just amazing. Let me just do one thing. I'm going to show this one. And okay. This is a very different way of looking at the charts. Let me just change that across. Are you able to see the screen? I want to show you something very interesting. This is Nifty 50. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? This might be looking lot of cluttered and noise around here, लेकिन ये बहुत ही powerful method है. Every one of you. Okay, this is a chart and a screen which shows a relative strength of stocks with respect to benchmark, which is Nifty 50. I'm again repeating. Nifty 50 के कंपैरिजन में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन ये स्क्रीन से हमें देख के मिलता है. ओके, दिस स्क्रीन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि कंपेयर्ड विद Nifty 50 हाउ इज दिस स्टॉक गोइंग टू परफॉर्म. What are the scales here? The right hand side scale that you see represents relative strength momentum. Momentum बढ़ रहा है क्या? Bottom scale represents relative strength. Relative strength क्या होता है? If you compare
TCS with Nifty, what is the strength? If you compare SBI with Nifty, what is the strength? If you compare any stock with any other benchmark, what is the strength? A stock which is moving, a stock which is moving from this quadrant, which is an improving quadrant, into this quadrant, which means the relative strength is improving and the momentum is picking up, is the stock which should perform well. I'm again repeating. अगर कोई stock relative strength left side से right side जा रहा है top, so this is the area where we have the momentum, we have the stocks, but the arrow should be upside, which means that's where the momentum is increasing. इधर ज्यादातर stock के arrow नीचे, मतलब momentum नहीं बन पा. So the stocks which are entering here are the ones going to show you how the strength is and how it's going to perform in the future relatively. इसमें से एक काम करूंगा, मैं सारे सिक्योरिटीज रखने के बदले मैं खाली 2-4 सिक्योरिटीज डालता हूं जिससे आपको पता चले ये कैसे काम कर रहा है. सो इफ आई एम लुकिंग एट से टाटा स्टील, फॉर दैट मैटर टीसीएस, फॉर दैट मैटर टाइटन, ट्रेंड, आई एम जस्ट पिकिंग अप randomly some stocks. Kotak Bank, how is it looking? And I'm picking up ICICI Bank, I'm picking up HUL, I'm picking up HDFC Bank, I'm picking up a few stocks just to see how is the relative strength looking compared to the entire market. I'm just showing you a few stocks comparatively. अडानी देखना है आपको, अडानी एंटरप्राइज डाल देता हूं मैं. टाटा स्टील मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, शायद से टाटा स्टील डाला है मैंने, हिंडाल को टाटा स्टील एक ही बात है. तो I have put it across over here. I'll put in something like a Sun Pharma. I'm putting randomly few stocks. Now we want to see how these stocks are. LNT डालना है, आपके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे फिर एक एक करके अगर मैं सब कुछ डालता रहा तो. आई एम नॉट पुटिंग इट मोर, ये हम बाद में करेंगे. सो फिलहाल तो मैं इतने ही डाल रहा हूं और इतने स्टॉक्स मैंने डाल दिए. अभी इसमें क्या देखना है हमें, सिंपल सा चार्ट है ये. अगर आप चार्ट देख रहे हो, this chart represents how is the relative strength. Relative strength, again I am repeating, means how is this stock doing compared to index. If index is falling, this stock is falling less. If index बढ़ रहा है, ये stock ज्यादा बढ़ रहा है. अगर मैं इतने से stocks को देखता हूं, जो भी stocks इस ब्लू जोन में से ग्रीन जोन में आ रहे, मतलब मोमेंटम पिकअप हो रहा है. जो स्टॉक्स ग्रीन में से निकल के नीचे आ रहे, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है. ठीक है, जो स्टॉक्स यहां पर है वो मतलब बहुत ही गड़बड़ है. तो मुझे रेड वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे गिरने वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए फिलहाल के लिए. दिस कैन चेंज वेरी फास्ट, इट कैन चेंज इन 2 or 3 days ऑफ टाइम. गिरने वाले स्टॉक्स फिलहाल के लिए नहीं चाहिए. मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो यहां से बढ़ रहे आगे की ओर. सो this becomes my shortlisted candidate, this becomes my shortlisted candidate, this becomes my shortlisted candidate. This can be considered, this can be considered. So इन स्टॉक्स के ऊपर मुझे वॉच लिस्ट में देखना है कि कोई पैटर्न बन रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है और ये स्टॉक्स मेरे इंट्राडे और पोजिशनल के लिए काम आएंगे. आर यू विथ मी? सो व्हाट इज हैपनिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, लीडिंग सेक्टर जितना ज्यादा हायर रीडिंग उतना ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम. नीचे की एक्स एक्सिस पे जितनी ज्यादा हायर रीडिंग उतनी ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ मूवमेंट. दिस इज डेवलप्ड बाय जूलियस डी कैंपनर, माय मेंटर, जो मैंने ट्वीट भी किया था. आई मेट हिम लास्ट वीक. So I'm building upon this. You can put your entire portfolio also here and compare with benchmark with stocks. ये तो डेली है, वीकली पे करेंगे तो दूसरा व्यू मिलेगा, डेली पे दूसरा व्यू मिलेगा. This is a very different way of seeing relative performance of a stock. So Nifty and stocks relative performance with respect to benchmark in one single chart can give you clear picture which sector or stock can outperform from here on.
This is known as relative rotational chart. Okay, यहां पर देखिए, this is how it has to be. This tool is not available everywhere. This tool is available only on a specific platform. I'll come with that, how to go about it. Let me first be very confident about whatever we are doing. Is it working out well? Is the stock selection working out well? वो सारी चीजें करनी है. But are you able to see this? Every one of you? Am I making sense to you? कि कौन से स्टॉक्स को देखना है, कैसे देखना है. और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? सो इफ आई जस्ट गो बैक इन हिस्ट्री, सी दिस, look at Adani Enterprise, the blue one. Look at trend. So I'm rotating in the past. Pick up one stock. I'm going to pick up one stock. Say trend. Keep a watch on the blue line, which is trend. See how it went. It went down to the yellow. From the yellow, underperformance, went down to the red, very sharp underperformance. Can you see the trend moving up from there, going back into the blue line, reverse ho gaya? Can you see that? From the blue, huge performance, huge performance. Now this was different period. So this period agar aap dekhoge, this was when the performance was when, wo aap dekh sakte ho, wo aap check kar sakte ho. This performance was 19th of August. 19th of August. And then again trend went down, underperformed, and then again reversed back, and now again reversing back. Are you with me? Are you seeing that? How it moves all over the place? Can you see that? How it's moving now? Coming back into the blue, from the blue into the leading into the lagging, which means that's the sector rotation. That is the sector rotation, which means that the stock which is relatively outperforming are the ones you have to be there before it break out. Now you have to go and check the charts. So for example, Titan is looking there. Now what I can do is I can simply go and split and put up a chart here and look at something like something known as trend. What is it doing? So if I'm looking at trend, I can see it's underperforming. Trend is underperforming even now. That is the trend, and that's the daily time frame chart I'm loading right now. Now, if it is underperforming, but it is started to show an improvement on the chart, can I say it can be a classic reversal bet? Are you with me? Every one of you. Can you see that? So this is how, this is before the move has happened, it's showing something is changing. Okay, before the move has happened, it shows something is changing. So you need to pick up stocks, you need to see the charts, and you need to identify if something is changing. And that's how you have to trade. This is on the daily time frame chart. You can do it on a weekly chart. Weekly, you will see a different set of stocks, different set of performance, and you will see weekly chart. देखेंगे यहां से हम इसे हम रिमूव करते हैं, ये वीकली स्केल पे आ गया. वीकली चार्ट शोज the stocks that are underperforming might enter on the right hand side. I can reduce this tail जिससे मुझे clarity मिले, ज्यादा data नहीं चाहिए. Okay, this much of data, and I can see which stocks can possibly enter from where to where. And now if you see this thing, you will find out weekly positional swing trading stocks. So as I said, I'm still experimenting with it, but if you know, यहाँ पर it's an amazing platform, and I'll come out. I'll teach my mentees about it in much detail once I am pretty confident on stock selection basis of relative rotational graph. So is it interesting, guys, or are you bored with seeing some new research? This is very different research, a very different way of looking at things. Is it interesting? We'll come back to the neo wave analysis of Nifty. We'll come there. We'll look at the volume profile, जो हमारा options मंत्र में volume profile और वो सारी चीजें भी होती है. अभी फिलहाल bottom line में Nifty या Nifty पे करना क्या? The reason I'm showing this is many of you are asking me, sir, you never discuss about stocks and things like that. So I thought, let me just share it across. This is awesome, right? तो चार्ट के ऊपर हमें देखना है. What we have to do is we need to look at the chart. Once we know relatively perform कर सकता है, then we have to go on the chart. So we need to club both of those things.
together. What we want to see is on the new wave perspective. I'm coming back to what looks very familiar. Now, new wave looks familiar. If I'm looking at this chart, this is the overall chart where we can see the entire pattern from wave perspective is moving this way, and from hourly perspective, if I'm looking at this one, we can clearly see the price went up in the form of A, B, C, wave down in the form of D. We are right now in the form of E. If my chart and pattern assumption is correct, we might be moving towards 25,600. But price should not break 25,020. Are you seeing the power of 25,020, guys? 25,020 जो levels है is working super. 2 दिन से वो लेवल की बात करो, 25,020 तक गया मार्केट और वहीं से रिवर्स हुआ 25,020 and reverse. And did you follow the lunar cycle? Did you see how Purnima worked out so brilliantly well? होने के पहले पूर्णिमा वाला साइकिल देखा आपने? 7 अक्टूबर का एक डेट मेंशन था पूर्णिमा साइकिल का, and it was mentioned 7th October is going to be crucial. And from that Purnima cycle, look at it. विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ. Basis of the lunar cycle, people say it doesn't work. I'm saying use करके तो देखो. 7th October, can you see that? 7th October, crucial. And every Purnima, can you see that? This was Purnima, market went up. This was Purnima, market went up. Things changed from this. अमावस्या से नीचे जा रहा है अभी भी. So Purnima market is going up, which means our next अमावस्या तक की time है. And from there, we started rallying from 7th October. What a move. What a brilliant move from 7th October. So if I go back on the chart and go back to the 7th October, it just worked like magic. So where is 7th October? Well, let's go back to that. This is 7th October. From here, we have started going up from 7th October already. And amazing move. If you look at it, this was Purnima and we started going up. So if you're looking at this, 2 से 3 दिन का up move होना चाहिए था. Done. It worked out well. So for point is कि from a neo wave perspective, from a wave pattern perspective, and from a volume profile perspective, I mean the markets are moving absolutely in sync. What is the overall target that we are looking at right now? 25,600. पहला पड़ा हुआ है 25,361. गेन लेवल्स के पास में हम ऑलमोस्ट आ चुके. From this level, we can then expect it to go towards 25,600. Okay. Sandipan keh rahe bought call on 7th and rewarded. Okay. So if you suggest rollover or overnight position suitable for future or options, as today we did not get chance to enter. I'll not be able to explain it here, Ravi, but you should know these methods. There are ways in which you can apply these methods and techniques, and you can do that. So Nifty pay overall, unless 25,020 breaks, the trend is positive. If I look at the weekly trend, weekly bias has turned up. Look at this weekly chart. Are you seeing this weekly chart? The weekly bias has turned up. If I look at the daily chart, the daily bias is positive. And despite of all the news, if I look at the hourly chart is positive. Nothing has changed. Simple price action has worked like magic. So every level, if you can simply use this, it will work very well. And you can combine it with a very powerful, maybe you can use an AK indicator, which works fantastically with me. अगर आप option trade करते हो, and then KST can also be used. KST is a very powerful method. I'm going to take a very quick poll to also understand how many of you are trading in options here. I'm taking a poll right now. I want to know how many of you are trading in options. See, going to tell you one thing. Options are a very Trump did not get a Nobel Prize, but the market is boom here. Yes, absolutely. Options are a very powerful instrument. You can trade in options when there is lack of momentum by way of forming a strategy. You can trade in options by way of
of buying a call and selling a call, creating spreads. You can trade options by simply selling a put option in order to ride it. But you need to know which strikes to select. You need to know when to reverse, when will it reverse. All of those things समझना आपको important है. और ये समझने के साथ इफ यू कैन कंबाइन सम इंडिकेटर्स, एक है तो आप यूज कर रहे हो तो जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू कंबाइन केल्टनर चैनल, केएसटी, कंबाइन दैट टुगेदर विथ एन ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, एंड यू विल सी द मैजिक. When you combine these price action, Keltner, super trend also, ये पोल में एंड कर रहा हूं, combined with super trend. If you do these combinations of methods, you will see amazing way in which you can trade these neo wave and time cycles. So options are very powerful. You need to know which expiry to select. You need to know which strategy to form. You need to know which strike price to select. You need to know what is the momentum of the market. What is the IV? IV is implied volatility. Implied volatility लास्ट एक महीने पहले मैंने बात की थी, फिर से हिलना चालू हो गया है. Implied volatility started moving, which means something major is happening in markets, and you can see that. And you need to combine with volume profile. Volume profile is amazing when you look at the stocks. When you do that, you need to combine it with volume profile. So volumes, when you are looking at it, you should be looking at how much volume has taken place at a price point rather than volume taking place down here. So you need to combine that. And Ichimoku cloud agar aap use kare, fantastic for wave counting. So these are the indicators. So many of you will be asking me कि अब मैं क्या क्या use करता हूँ. मैं सारी चीजें use करता हूँ दोस्तों. And it's not that it does not work. I have different strategies. So one strategy is to simply use my AK indicator and keep trading that portfolio. Another is combining with time cycle, these methods and super trend. Another one in option I combine with KST में signal मिला क्या, Keltner channel के साथ में and price action. And these are the strategy which works. RT is saying, sir, thanks for your tweets and your stress on stop loss. I made about 80% of the money that I had lost. Wow, super. Join the WhatsApp group as well. Glad to know it's working for you guys. It's working. That is what is more important. So I can't teach volume profile in 2 minutes, please. कल एक काम करेंगे. Are you guys available tomorrow morning at 11? आप लोग हैं क्या अवेलेबल? तो गोल्ड सिल्वर पे बात करना है आपको कल 11 बजे मास्टर क्लास में. गोल्ड सिल्वर के एलियट वेव देखना है क्या? कौन कौन है इंटरेस्टेड? डायरेक्टर साहब लिंक शेयर करेंगे, वेबिनार लिंक शेयर करना, wavestrategycom/webinar वाला लिंक शेयर करना सभी के साथ में. कल एक मास्टर क्लास रखते हैं हम, यूट्यूब पे भी शेयर करिए. 11 अक्टूबर 11 AM जूम पे एक्सक्लूसिवली होगा. तो क्या क्या बात करेंगे हम अगर ये मास्टर क्लास में आप हो? वी विल टॉक अबाउट गोल्ड, विल टॉक अबाउट सिल्वर एलियट वेव, बहुत टाइम से नहीं की उसके बारे में बात. विल टॉक अबाउट स्टॉक्स पे एलियट वेव काउंट्स. We will talk about Elliott wave combined with time. It has been some time that we have not talked about it. And forecasting with Elliott wave आप खुद करोगे, मैं आपको करवाऊंगा. I'm going to empower you with volume profile. So someone was asking, can you teach volume profile? I'm going to teach you volume profile also. If you are available, 11 o'clock, 11th October, 11 AM पे हम करने वाले हैं इस चीज को. सो यहां पर जुड़ने के लिए लिंक शेयर हुई है. इट्स गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली ऑन जूम. इफ टाइम परमिट्स यूट्यूब पे शायद लाइव करेंगे, मे बी नहीं करेंगे. सो यू हैव टू बी देयर इन दिस. Rachna Namade, glad to see you. Rachna, she is a brilliant mentee. She is mentioned booked 120% returns on capital in options. Glad to know, Rachna, it's working out for you. Very it's pleasure कि आप ब्रह्मास्त्र में से सीखे और it's helping you. It's my pleasure to see that. And यहाँ पर क्रूड ऑयल पे चलिए, क्रूड ऑयल को भी ऐड करेंगे. सर जी 800 पॉइंट्स मूव ऑलमोस्ट डन. यस, मैंने शुरुआत में ही बताया था. एक ही इंडिकेटर एक्स यूएसडी पे मैं नहीं लगा रहा अभी 5 मिनट पे. इट्स गोइंग टू बी सुपर. मिस्टर आचार्य, यू आर योर एकलव्य. You followed the new wave theory. Super profit in last 5 days. 1.5 lakhs profits made. क्या बात है. आप लोग कौन कौन है यहाँ पर जो
वेव थियरी सीखना चाहता है, हमारी ऑप्शंस के साथ वेव थियरी सीखना चाहता है क्या? एक हमारा त्रिशूल प्रोग्राम है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग सून। सो अगर आप त्रिशूल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, लेट मी जस्ट टेक अप अ पोल वेरी क्विकली. If you are interested in the Trishul program where you learn about options, mantra, strategies, open interest profile, volume profile in much detail, plus you learn about Neo Wave and Elliott Wave application combined together with Ichimoku Cloud. It's a brilliant program. Trishul, it's known as Trishul. Trishul means three. Three means first is options, सेकंड इज एलियट वेव, थर्ड इज नियो वेव. डायरेक्टर साहब एक लिंक शेयर करिए सभी के साथ में, अगर आप त्रिशूल के पार्ट बनना चाहते हो तो इस लिंक पे आप जा सकते हो. इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग. इसमें क्या क्या मिले मैं शेयर कर देता हूं, बहुत सारे जन हैं जो लिख रहे हैं यहाँ पर त्रिशूल के बारे में. सो वंस यू गो ऑन दिस पेज, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इट्स ऑन 8th एंड 9th ऑफ नवंबर ऑप्शंस का, एंड 6-7 दिसंबर सूत्र ऑफ वेव्स का. बट हम आज से ही लोगों को प्री सेशन वीडियो का एक्सेस दे रहे हैं ऑप्शंस के लिए. बोनस वीडियोस आज से ही शुरू कर रहे हैं सो दैट द लर्निंग स्टार्ट्स. वी आर ऑल्सो गिविंग अक्रॉस master of technical analysis videos to people who are registering from Trishul, and this is known as Trishul membership. This is known as Trishul membership. यहाँ पर what a selection of tomorrow topic would suggest Nobel Prize to you and not to Trump. Thank you very much. So Trishul membership है हमारी. For many of you who wants to be a part of Trishul can go and register from the link which is given here. And there is a question here, sir. I want to become an expert on Neo Wave. How to go about it? Sandipan कह रहे, Sandipan, you are a part of Trishul program. Is awesome. It has changed my life. Glad to know that. So देखिए, Neo Wave सीखने के लिए आपको Elliott Wave आना चाहिए. एलियट वेव के साथ ऑप्शंस पता होना चाहिए. सो वी विल बी गिविंग यू एक्सेस टू एलियट वेव वीडियोस फॉर 5 hours. We'll be giving you access to options basic videos before we start with options mantra, and you have to learn from that. And then we have 2 days of options mantra session in which we will learn about 5 mantras. What are the 5 mantras? KST, Keltner channel, price action. We look at price action, super trend, and we combine with open interest volume profile. It's an amazing combination for option strategy. Directly options कर सकते हो आप वहां से. If you want to forecast market, then wave theory it is. So Brahmastra includes Trishul. Yes, Brahmastra, if you're a part of Brahmastra, you are a part of Trishul by default. You don't have to register separately for Trishul. क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टुमारो सेशन, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे हम एलियट वेव पे. वरुण विल डू दैट. सो त्रिशूल है, आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस त्रिशूल प्रोग्राम. इट्स गोइंग टू बी लवली. बहुत सारी चीजें इसमें हम करेंगे. देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर, सर. आई एम ऑलरेडी एन ऑप्शंस ट्रेडर, व्हाट न्यू विल आई लर्न? See, when you are already an options trader, the most important thing that you should know when you are trading in options, the strike price selection is the key. The expiry is the key. And the strategy on the expiry day पे कैसे strategy बनाए वो भी कर सकते हो आप. वीकली एक्सपायरी फिलहाल तो है, जब मंथली हो जाएगी तब का तब देखेंगे. यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई एम गोइंग टू एम्पावर यू विद स्ट्रेटेजी. कैन वर्क ऑन मंथलीज, वीकलीज, स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाना है, कैसे अपने पोजीशन को हेज करना है, हाउ टू कन्वर्ट योर लूजिंग पोजीशन इनटू अ प्रॉफिटेबल वन कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क समझ के कैसे एडजस्टमेंट्स करना है. सो ये सारी चीजें हम करेंगे ऑन त्रिशूल. टाइमिंग त्रिशूल का होगा विच इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे संडे मॉर्निंग 10 to 4 होगा, एंड वी विल बी गिविंग यू रिकॉर्डिंग. दिस इज अ त्रिशूल मेंबरशिप. रिमेंबर दैट it's a 3-month membership of Trishul where you get access to this, plus you will be also getting access to Nifty research report for a period of 1 month, and you'll also get access to AK indicator for a period of 3 months if you are a part of Trishul. So you don't have to, if you're a part of Trishul, you'll get all of those things. मेंटरशिप में जो स्कैनर बताया है उसमें लास्ट वाली कंडीशन एक बार चेक कीजिए. अभी नहीं चेक कर पाऊंगा मैं आई विल डिस्कस अबाउट इट इन मेंटरशिप. हमारा वेडनेसडे सेशन होने वाला है, विल डिस्कस दैट इन मेंटरशिप. सो एंड जो नियो वेव है, सूत्र ऑफ वेव्स इज सी ऑप्शंस मंत्र मतलब ओम. सूत्र ऑफ वेव्स इज सो बीज बोना जिसे हम कहते हैं, वहीं से शुरुआत की थी मैंने. सो इट कंप्लीट्स अबाउट एलियट वेव, नियो वेव, फिबोनाची टूल,
Ichimoku cloud, how to do wave count correctly in a simple way. ये सारी चीजें हैं. So we'll look at that also. So फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों. डायरेक्टर साहब कल का लिंक फिर से सभी के साथ शेयर कर दीजिए. मॉर्निंग 11 AM मास्टर क्लास में मिलेंगे. एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ त्रिशूल मेंबरशिप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर अक्रॉस. हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ. इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट टू हैव यू ऑल in Brahmastra. And I think if you have any questions, you can ask me. And but it has been brilliant experience in this week with the markets, with time cycle, phase theory, everything synchronized so accurately. गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, क्रूड के बारे में, वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में मास्टर क्लास 11 बजे है 11 अक्टूबर को, विच सैटरडे. कल के दिन बात करेंगे. ऑसम गाइस, तो आज के लिए इतना ही. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट. इट वाज वंडरफुल टू एड्रेस ईच वन ऑफ यू. एंड thank you very much. See you tomorrow. How many of you are joining tomorrow? Just give me a big thumbs up. I can see मंगेश, हेमंत आप जुड़ रहे हैं. कौन कौन है मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कौन कौन त्रिशूल में भी है, मेंटरशिप में, वो लोग भी आइए. सलील, राजेश, कौशिक, भावेश, आप सभी ये 15 मिनट पहले आना, क्योंकि अगर हम फुल हो जाएंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. सो इंश्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग एटलीस्ट 10-15 minutes prior. Because if you go full, you will not be able to join. And Zoom पे clarity better है, interaction better है. It will be happening TCS after results. I can't talk it because of I'm not talking specific stocks right now. Okay, still remembering last week webinar and your prediction worked like magic, right? Awesome, super. Nitesh, Aditya, sabhi जुड़ रहे हैं. Super guys, thank you very much for joining here, and it was wonderful to address. See you tomorrow on in the masterclass. Thank you.